Hi everybody, welcome to Creative Edge by Top Rankers, and I am Muskan Mulchandani. Today, what we are going to do is related to what comes in the GK section of NATA and JEE B.Arch. आर्किटेक्ट्स जिनके बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चंस एनकाउंटर करते हैं उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको इस क्लास में देना चाहूंगी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम फेमस आर्किटेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड करेंगे और उनकी बनाई हुई फेमस बिल्डिंग्स करेंगे। मेनली यू विल सी देयर पिक्चर्स, देयर फेसेस। द रीजन बीइंग आपको बहुत टाइम पे पिक्चर्स उनके काम के या उन आर्किटेक्ट्स के खुद के दिए जाते हैं एंड यू आर आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज by the name. Okay, so let's start with the first one on our list. The first one on our list is Mr. Frank Lloyd Wright, a very famous architect in this world, and he is acclaimed, well known for his piece द फॉलिंग वाटर, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट में है। एंड और कुछ काम जो उन्होंने किया है वो है द सोलोमन गुगनहाइम म्यूजियम जो न्यूयॉर्क में है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो ये फ्रैंक लॉयड राइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था। द नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज मिस्टर ली कॉर्बुज़ियर, जिनको हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं बाय द architect of the person who has designed the famous capital complex चंडीगढ़ की जो प्लान्ड सिटी है उसमें जो डिजाइनिंग की गई है वो बहुत सारे काफी पीसेस बनाए गए हैं बाय मिस्टर ली कॉर्बुज़ियर से द्वारा। The next one, which is a notable piece of work done by Lee Corbusier, is the Villa Savoy, which is in France, and the Notre Dame du Hort, which is in France itself. Okay. The third one on our list is Frank Gehry, another famous personality, एक Canadian American architect है, and काफी यूनिक कंटेम्प्ररी डिजाइन्स रही हैं इनके काम की। अगर आप इनका काम देखें, ये है गुगनहाइम म्यूजियम जो बिल्बोआ में है इन स्पेन। And if you will see the architecture, the lines, the construction, it's very different than the usual straight lines, curves, and everything. The Walt Disney Concert Hall, it is very noticeably visible कि ये जो दोनों pieces of work हैं ये एक artist द्वारा बनाए गए हैं। The Walt Disney Concert Hall is also built by Mr. Frank Gehry. An amazing piece of work is the dancing house which is in Prague in Czech Republic. ये भी बनाया गया है Mr. Frank Gehry द्वारा. Okay, I hope that you are noticing the pictures of these people as well, these architects as well, because there might be a chance that you are asked the name of an architect also. Okay, moving on to the next one is Renzo Piano, a very famous person who is behind the designing of a very famous building called the Shard, which is based in London. Other than that, he has also designed the Georges Pompidou, which is in Paris. And कुछ और काम जो इन्होंने किया है वो है Zentrum Paul Klee, जो बर्न में है। ठीक है, and the Whitney Museum of American Art. I hope you are seeing the pictures. Please see the style of architecture that these people have been working with. आप नोटिस करेंगे कि इनका जो काम है ये बहुत ही differentiable है from each other's work. ठीक है, the next one on our list is a very famous personality, Ms. Zaza Hadid, a personal favorite of mine. She passed away in 2016, I believe, and was a British architect. एंटवर्प पोर्ट हाउस अगर आप देख सकते हैं ये एंटवर्प में है इन बेल्जियम, और वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. By the way, just a little bit of info that the Belgian port is the world's biggest port till date. Okay, the Ḥeidar Aliyev Center, which is in Azerbaijan,
ठीक है, इन बाकू, in Baku in Azerbaijan, Bajan. And the next one on our list is Mr. Rem Koolhaas. And he's a Dutch architect who is famous for his innovative designs that merge technology along with nature. Seattle Public Library एक उसका उम्दा एग्जाम्पल है. Casa de Música, which is in Portugal, is another example of work done by Mr. Sam Koolhaas. And the Qatar National Library, you can see the lines of the building, which is in Doha, that is also designed by Mr. Sam Koolhaas. यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप पिक्चर्स देखेंगे वो शायद सिर्फ एक सिंगुलर पिक्चर होगा, वन व्यू होगा, बट मेरा सजेशन आपको रहेगा आफ्टर यू गो बैक होम and you revisit this page, this slides, have a look at various angles of these same structures. The simple reason being, कभी हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा गया हो एक टॉप व्यू देके या एक साइड व्यू देके और आप सोचे कि अरे हमने जो फोटो देखी थी वो तो ये फोटो से अलग है, ठीक है. So my suggestion to you would be कि it will be helpful to you. Also, it will enable you to remember. तो अलग अलग व्यूज से उसको देखिएगा, अलग अलग एंगल से, so that you remember the architect as well as the designed piece of structure. The next one on our list is Ayo Mingpi, a person whom I am in personal awe of. He lived to the ripe old age of 102 and gave us amazing structures like the John F. Kennedy Presidential Library and the Louvre Museum Pyramid. ये जो pyramid है, ये construction है मिस्टर यो मिंगपे की, ठीक है. बहुत बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिजाइन थी जब ये बनी थी लूवर म्यूजियम की, बट अब इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑफ आर्किटेक्चर. एंड आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर ज्योमेट्रिक लाइंस और पीसेस ऑफ ज्योमेट्री असेंबल की हुई हैं साथ में इन्होंने. The next one on our list is Antonio Gaudi, again a favorite architect of mine. बहुत फेमस स्ट्रक्चर है ला सग्राडा स्पेन में, जो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. तो इसका कंस्ट्रक्शन का जिम्मा लिया था एंटोनियो गाउडी ने, बट इन्होंने बीच में से लिया था, ठीक है. ला सग्राडा फैमिलिया के लिए इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था, but sadly he passed away and this is still incomplete and it is expected to be completed somewhere around 2026. Another famous structure made by him is the Park Güell, which is in Barcelona. You can see the lines, the beautiful construction done by him. आप नोट करेंगे कि इन आर्किटेक्ट्स की, हर आर्किटेक्ट की अपनी अलग अलग एक स्टाइल है, जो अगर आप इनके काम देखेंगे तो आपको नोटिस होगा कि वो स्टाइल बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल हो जाती है, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट आर्किटेक्ट इन आवर लिस्ट इज वुल्फ डीप्रिक्स एंड इनका फेमस काम है BMW वेल्ट, जो म्यूनिक में है. बहुत ही ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है ये. अदर देन दैट, मार्टिन लूथर चर्च जो ऑस्ट्रिया में है, ये भी वुल्फ डीप्रिक्स ने बनाया है. बहुत ही फंक्शनल आर्ट पीसेस बनाए गए हैं ये. आप नोटिस करेंगे कि ये जो हैं ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, इनमें आर्ट भी दिखेगी आपको, बट साथ साथ में आपको ये भी दिखेगा that there is a beauty to these structures. The next one on our list is Jean Gang, and some amazing piece of architecture you can see by her, that is in the Aqua Tower. I hope you can see why this is known as the Aqua Tower. You can see the folds, the crests and the troughs like a wave that the building has. Okay. The next one is the Richard Gilded Center at the American Museum of Natural History. Again, आप इसकी जो lines देखेंगे, बहुत ही stupendous structure है इसका, बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन है, एंड सीमलेसली ये अपने सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाता है. इट मिक्सेस रियली वेल विथ द आसपास की स्ट्रक्चर्स. द नेक्स्ट आर्टिस्ट ऑन आवर लिस्ट इज नॉर्मन फॉस्टर.
an amazing person. रिच स्टैक डोम नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने बर्लिन में, एंड ही इज अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ऑल्दो, ठीक है, बट ज्यादा हम इनको uh, अगर आपने ये बिल्डिंग देखी होगी द घरकिन, जो हमने आइकॉनिक बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड में भी कवर की थी, uh, ये दिस इज वन बिल्डिंग विच इज situated in London, and that as is also designed by Norman Foster. Oscar Neymar, again a Brazilian architect, a favorite of mine. Lovely structures, anti gravitational structures बोले जाते हैं जिनको, उसके लिए फेमस है द कैथीड्रल ऑफ ब्राजीलिया। अगर आप देख सकते हैं तो ये हाइपोबॉलिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। यूजुअली कंस्ट्रक्शन जो होती है ऐसे होती है, ऐसे होती है, बट यू कैन सी द ब्यूटी इन दिस स्ट्रक्चर। डू यू सी दैट इट हैज बीन मेड लाइक दिस? सो दैट्स द ब्यूटी। और बहुत बहुत ही सुंदर कैथीड्रल है ये। In one of our classes, we did cover this extensively. The next one is the Oscar Niemeyer Auditorium, which is in Italy. And again, another beautiful structure, the Casino di Madeira, which is in Funchal. And just see, the pavement also has a beauty in it. So all in all, these are famous buildings that have left a mark on the world. By I mean, these architects have left a mark on the world through these famous buildings of theirs, and uh, they have created pieces of art which are remembered through ages. तो बहुत ही सुंदर चीजें बनाई गई हैं इन आर्किटेक्ट्स द्वारा। वेयर नाटा इज कंसर्न्ड, काफी सारे क्वेश्चंस आर्किटेक्चर बेस्ड आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस तो काफी सारे देखे गए हैं इन द प्रीवियस पेपर्स, जिसमें आपको बिल्डिंग शायद दी जाती है, या एक आर्टिस्ट आर्किटेक्ट का नाम दिया जाता है, पिक्चर दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंगली कि किस किस तरीके का मतलब कौन सी कंस्ट्रक्शन किस आर्किटेक्ट ने ये बनाया है, या जो भी है ना। एंड आई कैन सी दैट somebody हैज अ डाउट देयर। yes, please tell me, what doubt do you have? Yes, please tell me, please go ahead with your doubt. Okay, seems like there is no response that I'm getting from the other end. Um, Anyways, what you can do is you can always connect with us on our number, and I'm sure that each one of you has the Creative Edge number. And uh, thank you so much. All the best to each one of you for your NATA. कीप प्रिपेयरिंग। आई नो कि ये ऐसा टाइम है जब आपके लिए आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, और वो सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बट प्लीज़ इस प्रिपरेशन को भी, इस 20 मिनट 25 मिनट की प्रिपरेशन को भी निग्लेक्ट मत करिए, और समय देते रहिए, उसको कंसिस्टेंट रहिए अपने काम के साथ। ऑल राइट, एंड ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर नाटा।